अगर ये गाने सुन के आपको गूज़बम्स नहीं आ रहे हैं तो आपने जुजुत्सु काइसन 2 किसी तरह मिस कर दिया है. एंड लेट मी टेल यू, you should definitely go and check out Jujutsu Kaisen. I think it is one of the most peak animes ongoing currently. And इसका season 3 का नया trailer has just dropped by Gege Akutami and Mappa Studios. Let's review and react to the trailer first. फिर मैं बात करूंगा about my overall thoughts on the series and where we feel we might be going next in this franchise. Okay. 俺はもうみんなと一緒にはいられない。 The Culling Game. Okay. Next arc. बहुत एक्शन होने वाला है इसमें. यूटा by Gege Akutami. मापा वाला January 2026 में आ रहा है सीजन 3 एंड आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो एक्सपेक्टेशन लाइक दिस. आई थॉट इसको थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज हमने जो लास्ट सीजन 2 देखा है विद द हिडन इन्वेंटरी आर्क एंड द शिबुया इंसिडेंट, अगर आपने नहीं देखा है आई वुड डेफिनेटली हाईली रेकमेंड दैट यू चेक आउट जुजुत्सु काइसन. सीजन 1 आपको लगेगा थोड़ा सा बिल्डअप है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग एलिमेंट्स. इट इज स्लाइटली सो बिकॉज यू आर बीइंग ईज्ड इनटू द यूनिवर्स. सीजन 2 स्टार्ट टू फिनिश इज peak anime. अगर आप anime lover हो, if you have been watching animes or if you have been reading mangas for a while, I definitely encourage that आप इस सीजन को देखो. The overall animation style, जो गेगे आकुटामी का स्टोरी चल रहा है, जिस टाइप के कैरेक्टर्स दिखाए हैं, उनका their complexities about what they think kind of drives them, their motivations, and how in some shape or form लोगों के motivations start clashing with each other, how all of this is fleshed out, how actually some friends also become rivals, and how that has a much larger impact on the bigger universe, all the way leading up to Shibuya incident, and it does not let down. So definitely something that I would recommend everyone to check out. And season 3, going into season 3, this is going to be covering the Culling Games का arc. And फिर से Culling Games का the entire arc, from what I already know about the manga, is just full of new characters. It is full of crazy insane action and insane fights. And ये world के अंदर जो अब already एक बहुत बड़ी अनहोनी चीज हो चुकी है, especially related to Gojo, how the balance of the world is going to completely change, how that is going to completely shift, and कैसे हमारे heroes की लगने वाली है is going to be uncovered in the Culling Games. I am not sure exactly where they're planning to end this season. And इसके अंदर अगर अराउंड 12 एपिसोड होंगे कि पिछले 2 सीजन की तरह अगेन इट विल हैव मोर देन 20 एपिसोड्स. Will it be in 2 different parts, just how the season 2 was also done, is something that we still have to uncover and unravel. But I'm really excited to see where they go, where they take us. The visuals from the trailer also look fantastic. बहुत ज़्यादा energy, music, the character motivations, all of it looks on point. Yuta versus Itadori देखने को हमें मिलने वाला है in the beginning of the entire series as well, of season 3. So going to be very interesting on how the animators have kind of done their job. Talking about the animators, Mappa Studios is infamous for creating amazing content for anime. पर वो अपने animators को घर नहीं भेजते हैं, अपने परिवार वालों से नहीं मिलने देते हैं. So I really hope that has not been the case this time around as well. And I really hope they deliver something that stays in line with what we've already established and seen in season 2. साथ ही साथ में दिस इज नॉट द ओनली न्यू न्यूज दैट इज कमिंग आउट. अभी रिसेंटली जेम्स गन ने ये भी रिवील कर दिया है कि हमें हमारा सुपरमैन का सीक्वल अगले 2 साल के अंदर मिलने वाला है. कैन यू रियली बिलीव इट? हमें इस साल सुपरमैन दिखी है, हमें अगले साल सुपर गर्ल दिख रही है, एंड उसके अगले साल हमें फिर से समर में सुपरमैन मिलने वाला है. 3 back-to-back years of summer superness, and I think it's going to be a lot of fun. The movie and the inspiration that he's taking from the comic books is from the Man of Tomorrow. जो इन्होंने अभी तक glimpses and images reveal करी हैं from the comic books to showcase the inspiration for this new movie is from the Man of Tomorrow, and it stars Lex Luthor and Superman. Lex Luthor को उनके battle armor में दिखाया जा रहा है, which is going to be very exciting to see finally in a live action series. And हमें सुपरमैन को उनके साथ दिखाया जा रहा है. So I'm sure in some shape or form there is going to be some back and forth between Superman and Lex, but
जो एक दो पैनल्स इन्होंने हमें फिर से दिखाए हैं एज टीजर्स, दे सीम टू बी सुपर चमी एज वेल. मतलब इज दिस गोइंग टू बी अ टीम अप बिटवीन लेक्स एंड सुपरमैन टू फाइट समथिंग मच बिगर, फाइट अ बिगर एनिमी? गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू सी. धीरे धीरे आई एम श्योर जेम्स गन इज गोइंग टू स्टार्ट रिवीलिंग द प्लॉट पॉइंट्स एंड द मेन स्टोरी लाइन दैट द एंटायर न्यू मूवी इज गोइंग टू बी फॉलोइंग एज वेल. हमने फर्स्ट मूवी में जस्टिस गैंग को देख लिया है. सुपर गर्ल आई थिंक शुड बी एबल टू बिल्ड ऑन इट अ लिटिल मोर. आपके नेक्स्ट ईयर लैंटर्न्स भी आने वाली है, which will definitely help expand the universe and the lore once again, all the way up to Superman when we see it in the year after in 2027. ये जुलाई में रिलीज होने जा रही है. I think by then we will already start getting introduced to the actual Justice League. So ये मेरी actually personal hopes हैं. I really have no idea where this is actually going to go, but finger crossed. We've been waiting to see Justice League done right on the big screen for so long, and Zack Snyder ने obviously कोशिश करी थी to give us something very epic, but Warner Brothers got in the way, which is definitely not going to be happening with James Gunn because he is in complete control of this entire universe. Peacemaker season 2 is also ongoing right now. I'm sure that is also going to start building in and fleshing out this entire DCU. So it's going to be very exciting to see how all these pieces come together and what we actually get to see as the stakes that play out in The Man of Tomorrow. क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम मैन ऑफ टुमारो और सुपरमैन 2? अगर आप उसको बुलाना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ऑल्सो हैव यू बीन वाचिंग जुजुत्सु काइजन? अगर आपने शुरू नहीं किया है, व्हाट इज द प्रेडोमिनेंट रीजन जो आपको अभी तक यू हैव नॉट बीन एबल टू गेट इनटू द एनिमे फ्रेंचाइज? बिकॉज आई कैन नॉट recommend it enough. I think this is definitely one of the best ongoing animes that we have currently. And Gege Akutami sama sir, ਤੁਸੀਂ great ho. I can't wait to watch all of this. Very exciting time to be a content lover. Next year is going to be peak and Jujutsu Kaisen for the win. James Gunn ki Superman is also going to be out very soon. So really excited to see where we go in the new DCU as well. Let us know guys in the comments below what you like about all of these new releases, all the new things that are coming out, and what are some things that you're hoping will be kind of integrated across both these franchises, whether that's Jujutsu Kaisen or that's DCU and the new Superman that's coming up. Like, share and subscribe guys. As always, we will be back with a lot more content. I'll see you guys in the next one. Bounce up on a Tuesday night. Straight lights home like a neon light. Got a story but I'll keep it tight. Not so harsh, not so bright.